Hello guys, good morning to all. This is shashank shekhar and welcome all to my channel गणपति क्लासेस। आशा करछि आपण माने समस्त बहुत भल भाव थिबे। रिसेंटली आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी रो थर्ड सेमिस्टर बीईडी रो थर्ड सेमिस्टर कंप्लीट होई सारछि फेब्रुआरी 20 रे। फेब्रुआरी 14 रु फेब्रुआरी 20 तक रहितला हमर आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी रो थर्ड सेमिस्टर बीईडी रो थर्ड सेमिस्टर से क्वेश्चन मान को आम देखीदे क्यों क्यों क्वेश्चन मान बेसिकली दुईटा पेडागोजी पेपर रही है साइंस मान पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स और पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस पीसीएम सीबीजेड पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस और से इंग्राजी रखी था पेडागोजी ऑफ इंग्लिश एंड आर्ट्स मान पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश था। देन दुईटा कंपलसरी पेपर थाए अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ आउ गोटे लर्निंग असेसमेंट। तो यही वर्ष आसी क्वेश्चन माने कौन कौन देखी नबा। तो प्रथम करिकी जोटा रहा पेपर एक्स पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स 40 मार्क रो एग्जाम रही है। टोटाल मार्क के रही है 40 मार्क्स। ये जो चार्टा पेपर रही चार्टा जाक पेपर 40 मार्क रो पेपर 1.5 आवर थाए। तो तुमको पार्ट ए और पार्ट बी रही है जमती 80 मार्क्स थाए 10टी 5 मार्क्स क्वेश्चन और 2टी 15 मार्क क्वेश्चन। सिमिलरली एथिरे कौन 5टी 5 मार्क्स क्वेश्चन और गोटे 15 मार्क क्वेश्चन थाए। आमर प्रीवियस वीडियो मान को देखी सारी फर्स्ट सेमिस्टर और सेकंड सेमिस्टर जमती भाव जमती पैटर्न में पड़ता से ही पैटर्न ही एका थर्ड सेमिस्टर ही एका अच्छी। तो देख फर्स्ट क्वेश्चन को आम देखी नवा कौन रही। फर्स्ट क्वेश्चन रहा राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम। आ गोटे क्वेश्चन रहा एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग करिकुलम। एटा गोटे रहा। देन सेकंड क्वेश्चन रहा एक्सप्लेन द एस्थेटिक सेंस ऑफ मैथमेटिक्स विथ सुइटेबल एग्जांपल। एक्सप्लेन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। सेपरी थर्ड नंबर क्वेश्चन रहा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इवोल्यूशंस एंड व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक व्हाइल प्रिपेयरिंग टेस्ट आइटम इन arithmetics. Fourth number question is say what are the characteristics of backwardness child and how to develop the children in the mathematics एवं यार और अच्छी ना कौन how to develop children speed and accuracy in the mathematics. सेपरी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है how do you develop professional competency as a mathematics teacher. What is the use of mathematics teachers associations. एटा गला पार्ट ए रो 5 मार्क क्वेश्चन एवं गोटे 15 मार्क क्वेश्चन रहा कौन डिस्क्राइब द डिफरेंट अप्रोचेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम। यार और अच्छी ना कौन और अच्छी प्रिपेयर एंड अचीवमेंट टेस्ट फॉर ए टॉपिक ऑफ ज्योमेट्री। तो ये पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स रो। देन रहा देख पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। ना पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस से क्यों क्यों क्वेश्चन मैंने आसी देख क्वेश्चन नंबर 1 रे राइट अबाउट आंध्र प्रदेश स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क 2011 एंड एक्सप्लेन द लर्निंग रिसोर्सेस फॉर फिजिकल साइंस। देन रहा 2 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल। यार और दीजिए ना कौन पे मैंने एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क इन फिजिकल साइंस। ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइंस क्लब एंड साइंस एग्जीबिशन इन फिजिकल साइंस लर्निंग एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनजीओ इन द प्रोपागेशन ऑफ साइंस। 3 नंबर क्वेश्चन गला। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो पे मैंने स्पीड कर देती लाइक कौन पे ना बहुत गुड़िए पेपर अच्छी। तो देखो एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल साइंस टीचर। यार और देला कौन व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च इन फिजिकल साइंस। देन फिफ्थ नंबर देला व्हाट इज टेस्ट। राइट द क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेस्ट। डिस्क्राइब द इवोल्यूशंस ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन फिजिकल साइंस। एट गला 15 मार्क क्वेश्चन देखो डिफाइन करिकुलम एंड एक्सप्लेन द वेरियस अप्रोचेस टू करिकुलम ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रोग्राम्स इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल साइंस टीचर। ओके। देन अच्छी देखो पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस से कौन अच्छी फर्स्ट क्वेश्चन देला राइट अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस ऑफ करिकुलम। राइट द की प्रिंसिपल ऑफ एपी स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क 2011
mention the advantages of all purpose laboratory and mobile science laboratory, explain the guidance or instruction for the student about the practical work in the laboratory as a science teacher, explain the electronic teaching aid, what are the improvised teaching aid, explain its characteristics and advantages, explain the organizations of the science club, write about the community resources of biological science. Then fifth number है write the different type of test, explain the concept of CCE. Then sixth number है write about the approaches of organizing curriculum, detail, prepare a blueprint from its weightage table of topic of your choice. Then है pedagogy of social science. Social science रे कौन कौन रहला pedagogy? What is earth movement? Explain with details. Write the meaning, nature and scope of economics. Explain the Indian democracy, what is globalization, and write characteristics of globalization. Explain meaning and definition of curriculum, write a function of textbook. Then write a classification of teaching learning material by TLM, explain the maps and use of maps. What is the meaning of test, examination, measurement and evaluation, explain qualities of a good test. Write a briefly CCE model evaluation procedure, describe briefly principle of social science curriculum construction. Okay, then देखो पिला माने pedagogy of English. What is communication, what is the need for communication, write about individual and pair activity, explain the place and importance of English grammar, how is using authentic material helpful in teaching grammar, explain a few vocabulary games, what are the basic form of note making, what are the aims of teaching pronunciation, explain the advantages of language laboratory, and what are the principle of construction of a test, explain a few activity to enhance imagination. Then रहला एठी कोन 6th number है explain the process of teaching and grading of vocabulary items, discuss the importance of interpersonal skill for success in teaching learning process. Okay, then रहला देखो लर्निंग असेसमेंट कंपलसरी पेपर जिन रहला लर्निंग असेसमेंट आर्ट साइंस पीसीएम सीबीजेड समस्त पई एटा रहिबो लर्निंग असेसमेंट पेपर XII एथिरे कोन रहला एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्वालिटी असेसमेंट, राइट ए इम्प्लिकेशन ऑफ लर्निंग थ्योरीज फ्रॉम क्लासरूम असेसमेंट. देन 2 नंबर है व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE, तार कॉन्सेप्ट कोन, राइट a teacher made and standardized test, describe a constructive approach concept, write a tool and technique of evaluation, explain a analysis and interpretation of students performance, and how deciding on the nature and form of assessment, write a issue and problem in assessment and evaluation, explain the computer based examination. Arrow sixth number है 15 मार्क रे राइट वेटेज ऑफ कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव एलोकेशन ऑफ टाइम प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, राइट द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन एंड एंट्रेंस टेस्ट ऑन टीचिंग लर्निंग एक्सप्लेन. ओके, देन लास्ट रहा अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एथिरे कोन क्वेश्चन आसला ना राइट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकर. According to Maslow, what is the importance of understanding commonalities? Then 2 number है how is impact of globalization in Indian culture? Which of the biological factor in gender difference? Describe the independence of self on the nature for the very life. What is the importance and value of joint family in India?
Write a step to effective classroom communication. What is a need for teaching learning material in teaching? TLM ଯେମିତି. Write a sum of the characteristics of humanity in which influence the individual. Write a yoga practice for physical, mental and spiritual health. Explain. And last रहेला explain the philosophy of Swami Vivekananda in understanding the human roots and describe the teacher professional skill. Explain details. Okay, so this is all about third semester BD of आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी जहाँकि 20 फेब्रुआरी खत्म हो सारी यही वर्षर क्वेश्चंस माने आशा करी भिडियोटी आपको निश्चित रूप से भल लगुवा कि इनफॉर्मेटिव थिले सांग मान सहित शेयर कर और चैनल को प्रथम थर पर आसते चैनल को सब्सक्राइब करने भूलु ना डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। भगवान तुमको बहुत खुशी रखु आज एतकी रहा नेक्स्ट वीडियो पुनश्च देखा सो थैंक्स फॉर गाइज एंड थैंक यू ए लॉट। Oh, these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. But they wanna move like that.